भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में 8 मार्च 2026 से 4 अप्रैल 2026 तक चलाए जाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 की पूर्व तैयारी हेतु आज भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव प्रदेश के द्वारा प्रदेश के अध्यक्ष श्री महेश भाई अगरिया की उपस्थिति में दमन जिला के वक्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। दमन जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री भरत भाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में मुख्य वक्ता के रूप में श्री मजीदीन और श्रीमती सोनलबेन पटेल द्वारा को मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम में प्रशिक्षण गीत श्रीमती नमिता बेन मिस्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया। आज के कार्यक्रम में अन्य प्रमुखों में दमन जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री धर्म भाई पटेल, दमन नगरपालिका की अध्यक्षा श्रीमती दीपिका बेन इन सहित दमन जिला के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री धनसुख पटेल द्वारा किया गया एवं अब श्री कल्पेश सीताराम द्वारा किया गया। जिला मोर्चा पदाधिकारीगण तथा वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष श्री महेश भाई आदिगा जी, दमन जिला अध्यक्ष श्री भरत भाई पटेल जी, विद्या संयोजक तथा आज प्रशिक्षण पदना वक्ता भाई श्री मजीद भाई अदानी जी તેમજ નગરપાલિકાના માજી પ્રમુખ તથા આજના ભારત માતા की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक मिनिट। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देशभर में 8 मार्च थी 14 एप्रिल सुधी पोताना कार्यकर्ताओं माटे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शिविरों आयोजन करवामां आवेलुं छे, जे आ एक निरंतर प्रक्रिया है। ए उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली दमन दीव प्रदेश में पण अमे लोको प्रदेश स्तरनु प्रशिक्षण शिविरनी आयोजन करी चूक्या छीए सिलवासामां अटल भवन में। अने आजे आ जे छे अमारुं जिल्ला अने मंडल स्तरनी एक प्रशिक्षण शिविर छे। आमां अमे लोको जे वक्ताओ छे जे मंडल अने बूथ सुधी जई अने कार्यकर्ताओने प्रशिक्षित करवाना छे, एमने प्रशिक्षित करवा माटे थईने आजनी आ शिविरनुं आयोजन करवामां आवेलुं छे। तो आज आ शिविरना माध्यमथी अमे लोको जे भारतीय जनता पार्टीना प्रशिक्षणना जे विविध विषयों है, जेवी रीते 7 जेवा विषयों है, तो ये विषयों पर अमारा कार्यकर्ताओने अमारा वक्ताओने मार्गदर्शन आपशुं। भाजपा दमन जिला द्वारा અહીં એક પ્રશિક્ષણ કાર્યશાળા રાખવામાં આવી। એમાં જિલ્લાના જનપ્રતિનિધિઓ, સરપંચ, જિલ્લા પંચાયત મેમ્બર, મંડળના અધ્યક્ષો, મોરચાના અધ્યક્ષો, મહામંત્રીઓ અને મોટી સંખ્યામાં ભાજપાના કાર્યકર્તા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। જે અમારા આ પ્રશિક્ષણના વક્તાઓ મસ્જિદભાઈ લદાનજી અને શ્રીમતી સોનલબેન પટેલજી દ્વારા પ્રશિક્ષણ આ કાર્યશાળામાં અભ્યાસ આપવામાં આવ્યો। અને જે રીતના આપણે સૌ જાણીએ છીએ, આપણા દેશના આદરણીય પ્રધાનમંત્રીજીના નેતૃત્વમાં આપણું વિકસિત ભારત, અખંડ ભારત બનાવવાનું અને પાર્ટીનું ડિસિપ્લિન, પાર્ટીમાં સંગઠનને કેવી રીતના મજબૂત કરવાનું, પાર્ટીમાં કેવી રીતના ડિસિપ્લિનને જાળવી રાખવાનું, આ પ્રશિક્ષણમાં કાર્યકર્તાઓને સમજણ આપવામાં આવી। અને આ કાર્યકર્તા દ્વારા મંડળ અધ્યક્ષમાં મંડળના બૂથ સુધી આ શાખાઓ ચાલશે। અને જે રીતના પાર્ટીનો આદેશ, પાર્ટીની જે કાર્યશાળા છે તે રીતનું મંડળ અને બૂથ સુધી આ કાર્યશાળા ચલાવવામાં આવશે, જે 8 માર્ચથી 14 એપ્રિલ સુધીમાં આ કાર્યશાળાઓ ચાલી પૂર્ણ કરવામાં આવશે।